हेलो एलिमेंट्स। तो लास्ट वीक जैसे कि फ्लड था, तुम लोग नहीं आ पाए, बहुत जन मतलब क्लास में नहीं आ पाए। सो आई वाज थिंकिंग टू हैव अ वीडियो लेक्चर ऑन लाइट। सो लेट्स डेल्व इनटू द सेशन। देख लो, जल्दी में कर रहा हूँ और इसलिए फटफट बोल रहा हूँ सब कुछ, और ज़्यादा लाइट नहीं जलाए क्योंकि बोर्ड पे रिफ्लेक्शन होता है। सो सी फर्स्ट टॉपिक, rules for obtaining images formed by concave mirror. Rules for obtaining images formed by concave mirrors. Concave So there are totally 4 rules, 4 rules है total, ठीक है? Rule number 1 means before doing all the making all the ray diagrams, you need to know the rules. Rule number 1: when the ray of light is parallel to the principal axis. ठीक है? When the ray of light is parallel to the principal axis. Suppose for that you need to draw a concave mirror like that. This is concave like that. Cave जैसा shape होगा, ठीक है? Cave. So now for that you need to draw a principal axis. याद रखना, हमेशा डायग्राम पेंसिल से करना होगा. Everything must be done with pencils. यहाँ पे दे दो पोल, यहाँ पे चलो मान दे दो फोकस, यहाँ पे दे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, you know, as usual. So condition 1, rule 1 is when the ray of light is parallel to the principal axis. ऐसा ray of light जा रहा है which is parallel to the principal axis. See, this ray of light is parallel to this principal axis which is situated here. Parallel, एक के ऊपर है. At that time, the reflected ray should pass through the focus. Focus से pass होना है हमेशा याद रखना. So put arrow. अगर arrow नहीं देते, your marks will be cut. So conclusion is the reflected ray passes through the focus. बस हो गया. ये है रूल 1. ओके, तो ये मैंने दे दिया है. बाय द वे मैंने तुम लोगों को पिक्स दे दिया था. So just have the video. So done. Okay. Next is rule 2. I'm rubbing. ये just दिया है मैंने ताकि तुम लोग पढ़ो, ठीक है, घर में. Then you have to complete the sums. Next. Next rule is when the ray of light passes to the center of curvature. Number 2. When the ray of light passes through the center of curvature. Okay, center of curvature याद रखना है. तो फटाक से concave mirror ड्रॉ कर लो. So many tushes. See, now give the principal axis. Here is the pole. Okay, here is the focus. Here is the center of curvature. अब ray of light passes to the center of curvature. ऐसे जा रहा है. ये देखो ray of light. It is passing to the center. This one, center of the sphere. Okay, thinking. At that time, the reflected ray should also pass to the center of curvature. Opposite. अगर ये ऐसे पास करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रे, तो वो रिफ्लेक्टेड रे हमेशा ऑपोजिट पे पास करेगा, उल्टा जाएगा, उल्टा. Your conclusion will be the reflected ray also passes through the center of curvature. बोल सकते हो the reflected ray passes through the same path. The reflected, बोल सकते हो passes through the passes through
the same path. प्लीज ये सब नोट डाउन कर लेना, ठीक है? वीडियो मतलब थोड़ा पॉज करके इसने मतलब नहीं लिखा, कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ओके? नेक्स्ट रूल 3. सो आई एम रबिंग, पॉज करके वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करना. नेक्स्ट रूल 3. रूल 2 हो गया, कुछ कर लेते हैं. When the ray of light passes to the focus, जब फोकस से पास करता है तब क्या होता है? When the ray of light passes through the focus, okay? फोकस ये रहा तुम्हारा कनकेव मिरर. टुश जल्दी से फटाक से वो प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लो. फिर दे दो पोल. ये रहा तुम्हारा फोकस, ये रहा तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर. थर्ड रूल इज जब रे ऑफ लाइट फोकस से जब पास करता है तब क्या होता है? इट विल गो, द रिफ्लेक्टेड लाइट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. याद रखना है, दिस इज जस्ट द रिवर्स ऑफ रूल 1. रूल 1 था जब रे ऑफ लाइट पैरेलल जाता है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्शन होके फोकस से पास होता है. और रूल 3 में है जब रे ऑफ लाइट फोकस से जाता है वो रिफ्लेक्टेड लाइट पैरेलल जाता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. सी दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द रिफ्लेक्टेड लाइट, पैरेलल टुश. ओके, योर कंक्लूजन विल बी द रिफ्लेक्टेड रे passes parallel to the principal axis. Okay, this one done. पॉज करके नोट डाउन करना कॉपी में. ओके, रूल 4 बाकी है अभी. और जो समझ में नहीं आता प्लीज ग्रुप में बोलना है कि सर आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस लाइन एट दिस पॉइंट. जस्ट पुट टेक अ स्क्रीनशॉट, टुश करके सेंड कर देना. मैं बोल दूंगा वॉइस मैसेज जो भी होता है. ओके, रूल 4 इस केस में है व्हेन द रे ऑफ लाइट इज मेकिंग एन एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, सम थीटा एंगल इज व्हाट? थीटा. व्हेन द ray of light makes some angle with the principal axis. क्या होता है ये? सो ये रहा तुम्हारा पोल, ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर. नाउ द रे ऑफ लाइट इज मेकिंग सम एंगल थीटा. द रिफ्लेक्टेड विल आल्सो मेक सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस थीटा, which is like the law of reflection of light. कि angle of incidence is equal to the angle of reflection, saying the principal axis is acting here as the normal. Okay, normal. याद है ना? Laws of reflection of light. The angle of incidence is equal to the angle of reflection. So the reflected ray also makes the same angle with the principal axis. ठीक है, चलो ये हो गया नंबर 1 वीडियो नंबर 1 फॉर दिस रूल्स. अब बाकी डिस्कस करेंगे सेकेंड वीडियो में. ओके